So in the previous video we had seen about neuralgia. हम लोगों ने पिछले वीडियो में neuralgia पढ़ा था. So in this video we'll start with the next topic, that is Bell's palsy. So हम लोग Bell's palsy से अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं. So what is this Bell's palsy? So Bell's palsy, it is nothing but dysfunction to cranial nerve 7. Okay, that is facial nerve. So Bell's palsy, it is nothing but dysfunction to cranial nerve 7, that is facial nerve, that usually makes unable, like, sorry, it leads to inability for control the facial muscles on the affected side. Okay, this usually leads inability to control facial muscles on the affected side. Okay, so that is usually leads to inability to control the facial muscles on the affected side. So damage to this nerve usually causes weakness and paralysis of the muscles. Okay, damage to this nerve usually causes weakness and paralysis of the muscles. तो बेल्स पैल्सी होता क्या है? बेल्स पैल्सी होता है जब क्रेनियल नर्व 7 होता है ना, 12 क्रेनियल नर्व से उसमें जो 7th क्रेनियल नर्व होता है, जो फेशियल नर्व होता है, उसमें डैमेज दिखाई देगा. जब इसमें यहाँ पे डैमेज दिखाई देगा तो यहाँ पे जो होता है ना, वो मसल, फेशियल मसल्स जो होता है अफेक्टेड साइड में, वो सीधे से काम नहीं कर पाएंगे. उसके अलावा जब ये नर्व को डैमेज होगा तो वहाँ पे वीकनेस होगा और पैरालिसिस भी दिखाई देगा मसल्स में. सो दैट इज यूजुअली बेल्स पैल्सी. इट इज डिसफंक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व 7 दैट यूजुअली लीड्स टू इनएबिलिटी टू कंट्रोल द फेशियल मसल्स ऑन द अफेक्टेड साइड. डैमेज टू दिस नर्व यूजुअली कॉजेस वीकनेस एंड paralysis of the muscles, and this usually it is defined as this is usually defined as idiopathic unilateral facial nerve paralysis. Okay, so Bell's palsy is defined as idiopathic unilateral facial nerve paralysis. So this was usually identified by Charles Bell. Okay, it was usually identified by Charles Bell. He was a Scottish anatomist. Okay, he was a Scottish anatomist. He was the person who first described this Bell's palsy. So that is usually what happens. So Bell's palsy ये डिफाइन किया गया, ये इडियोपैथिक यूनिलैटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस है. ये फेशियल नर्व पैरालिसिस है किसने दिया था? चार्ल्स बेल ने दिया था, जो एक स्कॉटिश एनाटमिस्ट है. इसी बंदे ने पहले इसको दिया था. ओके, इसी बंदे ने इसको पहले दिया था. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस Bell's palsy. Understood? So Bell's palsy, it is dysfunction of the cranial nerve 7 that usually leads to inability to control facial muscles on the affected side. So damage to this facial nerve that usually leads to weakness and paralysis of the muscles. Okay, paralysis of the muscles. So it is usually about this. समझ में आ गया? So ये cranial nerve 7 को अफेक्ट करता है, जहाँ पे इस डैमेज होने से वीकनेस दिखाई देगा, पैरालिसिस भी होगा. So it is usually about this Bell's palsy. So next is causes. So causes, it is mainly due to infection. Okay, causes, it is mainly due to infection, that is Herpes zoster virus, and the other viruses also there which usually causes this. It includes cytomegalovirus, varicella zoster virus, and shingles. Other causes for this, it might be like brain tumor or stroke, yeah, it might be due to Lyme disease, or in case if the person is suffering from HIV infection, or in case of if the person is having middle ear infection. Okay, if the person is having middle ear infection. So that is usually about this causes of Bell's palsy. तो causes यहाँ पे होता है mainly ये होगा वायरस इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि हर्प्स जोस्टर वायरस, और ये इंपॉर्टेंट लाइक कॉज करता है. और बाकी वायरसेस भी है जो ये बेल्स पैल्सी को कॉज कर सकता है, जैसे कि साइटोमेगालो वायरस की वजह से हो सकता है, या ये मतलब इसके मतलब साइटोमेगालो वायरस की भी हो सकता है, या वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से भी हो सकता है, या ये शिंगल्स की भी वजह से भी हो सकता है. इसके अलावा बेल्स पैल्सी का दूसरा रीज़न भी है जिसकी वजह से ये हो सकता है, जैसे कि अगर बंदे में ब्रेन ट्यूमर है, उसको स्ट्रोक है, या उसको कोई भी मतलब उसको कुछ भी जैसे कि HIV इन्फेक्शन है उसमें, या मिडिल ईयर इन्फेक्शन है, इसके वजह से हो सकता है Bell's palsy. So this is about this causes of Bell's palsy. So next is symptoms. So normally patient, before development of this Bell's palsy, the person might develop cold. Okay, before development of this Bell's palsy, the person might develop cold. So normally the symptoms to occur, it can occur suddenly, or it takes time about 2 to 3 days to occur. So this usually occurs, it usually affects one side of the face. Okay, it usually affects on one side of the face. So what are the symptoms that you can see in this situation? They'll be having pain while eating. Drooling will be there on the affected side because they will not be able to eat properly. Drooping will be there, like eye on the affected side, the eyelids will be drooping out. Okay, they are set, and the
and also they'll be having a hard like pain, or they'll not be able to close the affected eye. Okay, they'll be not be able to close the affected side. So problem usually occurs. Okay, the problem usually occurs, or pain will be severe when the person smiles or shows any facial expression. Okay, the person smiles or shows any facial expression, so that time usually the person might have severe pain. Okay, that time the person will have severe pain. So that is usually seen. And also they will be having twitching of the facial muscles. Okay, they will be having twitching of the facial muscles. Dry eye. Okay, they will be having dry eye on the affected side. Okay, they will be having dry eye on the affected side. Then they will be having loss of sense of taste. Okay, there will be loss of sense of taste. Then they will be having sound will not be able to hear on the affected ear part. Okay, so they will not be able to hear sound on the affected ear. Okay, they will not be able to hear sound on the affected ear. So these are usually the symptoms that is usually seen in case of Bell's palsy. तो सिम्टम्स में हम लोग जब देखा जाए, सिम्टम्स व्हाट आर द थिंग्स बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ दिस बेल्स पैल्सी दे डेवलप कोल्ड एंड सिम्टम्स इट टेक्स अबाउट suddenly, or it takes about 2 to 3 days, or it may take about 2 to 3 days. And usually what happens is that normally they occur suddenly, or it takes 2 to 3 days, and primarily occurs on the one side of the body. Okay, it usually affects one side of the body. So they'll be having pain, or the face will be like pulled type. They'll be having difficulty to eat, swallow. Drooling will be there on the affected side. Drooping will be there. Eyelids will droop out. Then they'll be having difficult to close the eye. Dry eye will be there. They'll lose the sense of taste will be lost, and they will be having the sound will not be here on the affected ear. Okay, sound will not be here on the affected side. Then twitching will be there in the muscles. तो सिम्टम्स हम लोग जब देखा जाएगा, so सिम्टम्स में नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे सिम्टम्स में, तो बंदे को जो होता है ना सिम्टम्स, बेल्स पैल्सी होने से पहले बंदे में मतलब कोल्ड आएगा. बंदे में जब बेल्स पैल्सी नहीं होता है तो बंदे में कोल्ड होगा. सिम्टम्स सडनली मतलब जल्दी भी हो सकता है, ये 2 से 3 दिन लगता है उसको. कोल्ड पहले तो कोल्ड दिखाई देगा, उसके बाद तो ये सिम्टम्स को जाने में मतलब वो जल्दी भी दिखाई देगा, या 2 से 3 दिन लगेंगे. और ये सिम्टम्स होगा ना जिस भी एरिया में इफेक्ट हुआ है, जिस भी एरिया मतलब जो साइड में इफेक्ट हुआ है उसी साइड में दिखाई देगा. अगर लेफ्ट साइड में इफेक्ट हुआ है, राइट साइड में अगर इफेक्ट हुआ है तो राइट साइड में दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में इफेक्ट हुआ है तो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा. तो जिस साइड में होगा उस साइड में सिम्टम्स दिखाई देगा. तो क्या होगा, उसको ना पेन होगा, दर्द होगा, और मतलब वो जो जिस अफेक्टेड होता है वो नीचे गिरा हुआ जैसे दिखता है, और उसको खाने में तकलीफ होगी. ड्रूलिंग होगा, मतलब जो भी वो खाता है ना अफेक्टेड साइड से वो बाहर निकलते ही रहेगा. ड्रूपिंग होगा, मतलब जो आईलिड होता है ना वो ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगा, ऐसे बड़ा होके बाहर की तरफ दिखाई देगा उसको. तो वो हो सकता है उसको. और उसके मतलब वो जो आई अफेक्टेड आई है वो ड्राई आई होगा, उसमें पानी नहीं निकलता है. उसके बाद मसल्स में ट्विचिंग दिखाई देगा ज़्यादा से ज़्यादा, और जो भी अफेक्टेड है ना वहाँ पे सीधे से सुनाई नहीं देगा उसको सीधे से. और उसको एक आंख बंद करने में बहुत दर्द होगा, या उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा. सो इट इज़ यूजुअली अबाउट दिस सिम्टम्स ऑफ बेल्स पैल्सी. सो नेक्स्ट इज डायग्नोसिस. So diagnostic evaluation that we go, it is mainly history collection and physical examination should be done. CT scan of the head, MRI scan of the head is to be done. History collection, physical examination, CT scan and MRI scan should be done. Blood test should be done to know whether what is the exact cause of the Bell's palsy. So that is usually done. Then nerve conduction test has to be done. Okay, then it is usually nerve conduction test has to be done. Okay, nerve conduction test has to be done. So this is usually about this diagnostic evaluation. So diagnostic evaluation में हम लोग क्या देखेंगे, so normally history collection और physical examination करेंगे, उसके बाद nerve conduction test करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे कि एग्जैक्टली उसका कॉज जानने के लिए, और MRI और CT स्कैन करेंगे हेड का. सो दैट इज यूजुअली अबाउट दिस diagnostic test that is usually done. So next is management. So normally management, Bell's palsy usually what is that, they people with Bell's palsy will recover fully with or without treatment. Okay, they will recover fully with or without treatment. So now Bell's palsy it is usually treated with medication and physical therapy. Okay, Bell's palsy it is usually treated with medication and physical therapy. So normally Bell's palsy, it is people with Bell's palsy will be recovered fully with or without treatment. Agar in case if they want to go with treatment, they go with medication and physical therapy. Okay, they go with medication and physical therapy. So what are the medication that usually they give? It is mainly corticosteroids and antiviral drugs is given. Okay, mainly they go with giving corticosteroids and antiviral drugs. So corticosteroids which usually give, so mainly they go with prednisolone. Okay, mainly they go with prednisolone. It is anti-inflammatory drugs which reduces the swelling of the facial nerve. Okay, corticosteroids and antiviral drugs it is given. Corticosteroids it is mainly given prednisolone, and this prednisolone it is mainly given
It is an anti-inflammatory drug which usually reduces the swelling of the facial nerves. Okay, it reduces the swelling of the facial nerve. Then antiviral drugs, it is mainly given to reduce viral infection. So like that is usually it is usually done. So it is mainly acyclovir it is given. Okay, acyclovir it is usually given. Antiviral drugs, it is usually given to reduce the viral infection. Like acyclovir it is given. If the person is having severe pain, then we go with giving analgesics. Okay, if the person is having severe pain, then we go with giving analgesics. Okay, we go with giving analgesics, or we go with giving moist heat massage is also given. Okay, moist heat massage is also done. So that is usually given. And then we go with giving injection, that is botulinum toxin. Okay, we go with giving injection botulinum toxin. This is usually treat the affected side. Okay, this is mainly to treat the affected side with long term Bell's palsy. If the person is having Bell's palsy for a longer duration, then we go with giving this botulinum toxin injections. So mainly we go with like Bell's palsy. It can be people with Bell's palsy will be recovered with or without treatment. So normally we go with like giving them corticosteroids and antiviral therapy. Corticosteroids we give them prednisolone, and antiviral we go with acyclovir, and also we go with giving analgesics or moist heat massage will be done to relieve pain. And in case of the person is for longer duration, if the person is having Bell's palsy, then we go with injecting botulinum toxin on the affected side. Okay, we give them botulinum toxin affected side so that all the pain or symptoms will be reduced on the affected side. Then we go with eye ointments will be given, drops will be given. Okay, eye drops will be given on the affected eye drops, on the affected side the eye drops will be given. And also, so this is the medication that is usually we give for the for reducing the symptoms of Bell's palsy. Other than that, I have told you in the beginning, medication and physical therapy is given. So in this physical therapy we go with facial expressions will be done. Okay, facial expression, we'll ask the person to show some facial expressions. Okay, we'll ask the person to show some facial expressions so that the facial muscles can be improved. Okay, facial muscles can be improved. So that is usually about this मैनेजमेंट दैट इज यूजली डन. सो मैनेजमेंट यहाँ पे जो होता है ना, मतलब यहाँ पे जो बंदे को बेल्स पैल्सी है वो ट्रीटमेंट देने से भी ठीक हो जाएगा, ट्रीटमेंट ना देने से भी ठीक हो जाएगा. मतलब हम लोग जो देंगे वो होता है मेडिकेशन और फिजिकल थेरेपी देंगे. मेडिकेशन में जब हम लोग देते हैं वो हो गए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीवायरल ड्रग्स देंगे. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेडनिसोलोन देंगे जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, जो स्वेलिंग होता है ना फेशियल नर्व्स का उसको कम करता है. और दूसरा एंटीवायरल ड्रग्स हम लोग वायरल इन्फेक्शन को कम करने के लिए देते हैं, जैसे कि एसाइक्लोविर देंगे. और इसके अलावा उस बंदे में पेट दर्द है तो उसको हम लोग एनाल्जेसिक्स देंगे या उसको हीट मसाज करेंगे हम लोग इसमें. अगर बंदे को बेल्स पैल्सी बहुत समय से है तो हम लोग वहाँ पे उन लोगों को बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्ट करेंगे ताकि सिम्टम्स को रोक सके. आई इन्फेक्शन होने की वजह से आई में हम लोग आई ड्रॉप्स डालते ताकि इन्फेक्शन से बच सके हम लोग. और इसके अलावा फिजिकल थेरेपी करेंगे जहाँ पे हम लोग फेशियल एक्सप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन करने के लिए बोलेंगे ताकि जो मसल एट्रोपी है ना उसको हम लोग कम कर सकें. या हम लोग स्लिंग भी बिठाएंगे फेस में, जब वो खाने के टाइम में फेशियल स्लिंग बिठाएंगे ताकि एट्रोपी की वजह से खाने में दिक्कत ना हो. So this is usually the management that is usually done in this Bell's palsy. So Bell's palsy is nothing but dysfunction of the cranial nerve 7 which usually damages the facial muscles. Paralysis will be done as well as weakness will also be there. So this is about this Bell's palsy.